Welcome to my dear student of class 7. Today your session 11 of operation of rational number. Before it started it, there is one inquiry. Worksheet first, question number first, fifth part. First, fifth part. That is minus 2 whole 5 upon 6 plus 13 upon minus 6. पहले से प्रॉपर में करें मिक्स को 6 to 12, 5 17 upon 6 plus minus minus 13 upon 6. Now taking the LCM 6 minus 17 as it is, minus 13 as it is, minus minus plus, that is 30, but sign is negative, upon 6. 6 5 ja 30. Therefore answer is minus 5. Is it clear, my dear? Now come on to main point, your session 11. Yesterday we discussed question third first part. Now question third second part. Verify the, first of all we find the value of x into y into z and x into y into z. Then verify it is equal or not. Taking left hand side, second part, value for x is equal to minus 7 upon 11, y is equal to 4 upon 5 and z is equal to 3 upon 8. Is it clear, my dear? Put the value in left hand side, x into y into z. What is the value of x? Minus 7 upon 11, y is 4 upon 5, z is 3 upon 8. So first of all we solve the bracket. कुछ कैंसिल है नहीं, 7 4 जा 28, 11 5 जा 55. Now we solve 4 2 जा 4 7 जा another 7 3 जा 21, 55 to the 110. It is the left hand side. Now taking right hand side, x into y into z. Put the value of minus 7 upon 11 into y 4 upon 5 and 3 upon 8. Now we solve first of all the bracket. 4 2 ja 8, 3 5 2 ja 10. Now multiply 7 3 ja 21, 11 10 ja 110. Therefore left hand side equal to right hand side, so our property is verified, hence verified. Is it clear, my dear? Now third question for homework and fourth part. चलिए fourth part करते हैं. Our fourth part is, what is the our fourth part? X is equal to minus 3, y is equal to minus 4 upon 9 and z is equal to minus 7 upon 3. Is it clear, my dear? वही verify. Taking left hand side, x into y into z. What is the value of x? 3. What is the value of y? 4 upon 9 and z is minus 7 upon 3. First of all we solve the bracket. Minus minus plus. 7 4 the 28, 9 3 yeah 27. Now we solve 3 9 ja 28, 9 1 ja 9. This is the left hand side, minus 28 upon 9. Now we solve right hand side, x into y into z. Now put the value of x minus 3, y minus 4 upon 9 and z 7 upon 3. First of all solve the bracket. 3 3 ja 9, minus minus plus 4 upon 3. Now we solve it. 7 4 ja 28, 3 3 ja 9. Both are equal. Left hand side equal to right hand side. So our question, our property is solved. So hence very. Is it clear, my dear? Is it clear, my dear? Now next question. It is most important property. What is the property? Discuss the property first of all. Rabbit. चलिए. Let us start with property. What is the property? X into y plus z is equal to x into y plus x into z. Which property is this? This is page number 34, property 5th. If x, y, z are rational number, then x into y plus z is equal to x into y plus x into z. This is the distributive law of the multiplication over addition. ये जो प्रॉपर्टी है वो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ कहलाता है हमारा, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ.
डिस्ट्रीब्यूट हो गया ना बेटे, वाई प्लस जेड था, एक्स को इसके साथ भी मल्टीप्लाई कर दिया, एक्स को जेड के साथ, तो डिस्ट्रीब्यूट हो गया। क्या हो गया? दिस इज डिस्ट्रीब्यूट। इन नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज आल्सो एक्स इंटू वाई माइनस जेड, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा एक्स इंटू वाई माइनस, बस यहाँ माइनस आएगा आपका एक्स इंटू जेड। दिस इज द डिस्ट्रीब्यूट लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन, यानी सब्ट्रैक्शन में भी लग सकती है प्रॉपर्टी और एडिशन में भी लगेगी। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, ध्यान रखनी, होल लाइफ आपके काम आएगी, ठीक है। दिस इज द डिस्ट्रीब्यूट प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन एंड दिस इज द डिस्ट्रीब्यूट प्रॉपर्टी ऑफ सब्ट्रैक्शन। नाउ कम ऑन द क्वेश्चन दैट इज वेरीफाई। इस प्रॉपर्टी को वेरीफाई करना है। प्रॉपर्टी वेरीफाई फॉर द वैल्यू ऑफ एक्स is equal to 1/3, y is equal to 1/5 and z is equal to 1/7. Taking left hand side, x, what is the value of x? 1/3, y plus z, 1/5 plus 1/z, 1/3 LCM. Taking the LCM of 7 and 5, that is 35. 5 7 ja, 7 1 ja, 7 5 ja, 5 1 ja, 7 into 5 12/35, 3 4 ja, कुछ कट रहा है नहीं, 4/35. Now taking the right hand side, x into y plus y x into z. What is the value of x? 1/3, y is 1/5 plus x 1/3 and 1/z is 1/7. By applying Bode mass rule. Bode mass rule में first of all we do multiply. So 1 1 ja 1, 3 5 ja 15 plus 1 1 ja 1, 7 3 ja 21. Is it clear? Now add this rational number taking LCM 15 and 21. What is the LCM of 15 and 21? निकाल लें हम, 3 5 जा 3 7 जा, दिस इज 105, 15 7 जा 7 1 जा 21, 5 जा 5 1 जा, दैट इज 12/105, 4 3 4 जा 3 3 जा 3 5 जा, 4/25. लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, सो आवर प्रॉपर्टी इज वेरीफाई हेंस वेरीफाई. इज इट क्लियर माय डियर? प्रॉपर्टी हो गई. So second part for homework, my dear. In next session we discuss about 5th question, and please give me a problem of your problem in my WhatsApp number. Please give me a problem. काफ़ी कम वीडियो देखी जा रही हैं, प्लीज़ समझिए इस बात को, आपके भले के लिए ही हो रहा है ये सब, प्लीज़. So thank you very much my dear.